Assalamualaikum, all the students of Standard 5th. Subject EVS Part 2. Lesson number 2. Lesson name History and the Concept of Time. This lesson will continue. Today I will going to explain History and the Concept of Time. Common Era, Christian Era. The unilinear division of the time years that follow one after the other are arranged in serial order. In history books, also a chain of events that follow one after the other is presented in a linear and serial manner. For these, usually we refer to the common era, written in short as C or AD. Anno Domini. AD means Anno Domini, which means in the year of our Lord. The calendar we use today is based on the Christian era, now called the common era. बच्चों, जो हमारा पीछे जो हमारे जो सारे टाइम गुजर चुका था उसका हमें रेकनिंग नहीं पता था, यानी हम उसका हिसाब नहीं रख पाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो टाइम है उसको सीरियल में अरेंज किया गया, सीरियल ऑर्डर में अरेंज किया गया। आपकी हिस्ट्री के बुक में भी ऑल्सो ये प्रेजेंट है कि चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर इज प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर। और इसको किससे रिफर कर रहे बच्चों? कॉमन एरा एंड क्रिश्चियन एरा। और आज का जो हमारा कैलेंडर है, टुडेज कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन एरा। हम उसे क्या कहते हैं? नाउ कॉल वी कॉमन एरा। द एरा बिगैन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एरिया कब बिगैन होता है? मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज द ईयर व्हेन इट बिगैन। इट इज शोन विद द नंबर 1. The year after the era indicated by the next number in serial order. The first 100 years, for example, the first century of Common Era is written as 100 AD. The period of the first millennium of this era is written as 1000 CE or 1000 AD. Now, time before the Common Era or Christian Era. The period before the common era is known as the time before common era. यानी जो हमारा क्रिश्चियन एरा से पहले का जो पीरियड है हम उसे क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा, BCE और बिफोर क्राइस्ट. The years of this period are counted and written in reverse order. The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with 1 BCE. The first century before the common era is indicated as 101 BCE. यानी जो पहली जो फर्स्ट सेंचुरी है उसको कैसे इंडिकेट किया गया? 100 BCE. Let us look at some examples of this method of indicating time. Before the common era or Christian era, measures of time and methods of measuring time. Some examples say to measure time is to measure the length of time. We know the units of measuring time: second, minutes, hour, day, week, fortnight, month, year, century and millennium. हम टाइम को कैसे मेजर्स करते हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम. सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस यूनिट. सेकेंड जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है टाइम मेजरिंग का. There are various methods of measuring time in different parts of the world. Of these, the common or Christian era is the most widely used. कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा में जो है ये इंडिकेट किया जा रहा है टाइम को बहुत ही वाइडली यूज़ किया गया बच्चों. देर आर अदर मेथड्स टू, यानी बहुत और दूसरे भी तरीके हैं. वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन एरा बिगैन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट. It is an age-old custom to start a new era to commemorate a special events, as for example, the coronation of a great king. आपने सभी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों, coronation of a great king. यानी जब शिवाजी महाराज ने स्वराज को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने जब क्या किया था कि हमारी हिस्ट्री सभी को पता हो, इसीलिए उन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया था बच्चों, जिसे कोरोनेशन कैलेंडर कहा जाता है. वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड अ न्यू एरा और शाखा नोन एज
राज्याभिषेक शाखा इन 1674 AD। ये राज्याभिषेक यानी जब उनका राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ था, वो कब हुआ था? 1674 AD में। तभी कोरोनेशन कैलेंडर स्टार्ट हुआ टू कॉमरेट हिज कोरोनेशन। शालिवाहन शाखा एंड विक्रम संवत आर टू एरास दैट आर यूज्ड इन इंडिया। कौन से दो यूज किए जाते थे एरास? विक्रम संवत और शालिवाहन शाखा। The founder of Islam, Prophet Muhammad, migrated from Makkah to Medina. The Hijra era was started to commemorate his event. This Parsi community in India used the Shahinshahi era. हम जो ये कॉमन एरा है बच्चों, ये जीसस क्राइस्ट से स्टार्ट हुआ। फिर हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है जिसे हम हिजरी कहते हैं, हिजरी एरा, तो ये कहाँ से? जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को माइग्रेट किए थे, तब से हिजरी कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ। ओके बच्चों। और पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूज द शहीनशाही एरा, और पारसी जो है शहीनशाही यूज करते हैं। ओके। नाउ हिस्टोरिकल पीरियड्स। We learn in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. We also learn that every bygone moment makes up the past. The past is the subject matter of history. In a broad sense, the period of history goes back to the time of the birth of our solar system. यानी हमने फर्स्ट लेसन में हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। About events that happen in the past, यानी past. We also learn that every bygone moment make up the past. यानी जो भी bygone moment हुआ था past में, वो हमने सभी लर्न किए थे। The past is the subject matter of history. In a broad sense, the period of history goes back to the time of the birth. यानी जो past है उसमें ही हमको बताया जाता है कि हमारी हिस्ट्री कैसा, बिफोर जो हमारी हिस्ट्री थी वो अब पास्ट में है। और ये टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम हमारा कैसे आया है ये हमें बताया गया। आर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारा सोलर सिस्टम कब आया? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। आर अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है सोलर सिस्टम में एक planet है। So it is presumed that the earth was also formed 4.5 billion years ago. जब हमारा सोलर सिस्टम बनाया 4.5 बिलियन में बना था, बिगैन हुआ था, तभी हमारा प्लैनेट जो है, तभी हमारा जो अर्थ है वो भी इसके साथ 4.5 बिलियन में ही फॉर्म हो चुका था। Therefore, the time in history is divided into two main periods. हमारी जो हिस्ट्री है वो two main periods में डिवाइड हो चुकी है, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड historic period. Prehistoric period. Prehistoric simply means before history. Prehistory यानी history से पहले. The prehistoric period is the period of for which no written records are available by which to write its history. यानी prehistoric में कोई भी written वाले records available नहीं हैं। एंड देन हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री। साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज यानी डेटिंग। We are actually measuring time when we talk about today's date or day of the week, etc. We have seen that there are various methods of measuring time. These methods allows use to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. For example, if it is June, then we know that the early month was May and the next one will be July. Then when we measure time, we actually measure its length. जब हम time measure करते हैं, we actually measure its length. There are many layers of soil deposit one above the other under the surface of the ground. The period of these layers and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon 14 analysis, 3 rings analysis,
etc. These methods are known as dating techniques. जो हमारे जो इस मेथड्स को मतलब बताया है वो साइंटिस्ट है विलर्ड लिबी. विलर्ड लिबी ने इस टेक्निक को कार्बन 14 टेक्निक जो एनालिसिस है वो बताया. इससे हम डेटिंग टाइम्स को मेजर्स कर सकते हैं बच्चों. और ये बताने वाले विलर्ड लिबी है. बाय यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक्स वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम आर. Then we can conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC. Now, this is your homework. Fill in the blanks and answer each question in one sentence. And answer the following question in rhyme. Thank you students and Allah Hafiz.